So first question says first question says, which is super halogen? Okay, so basically first, we know, right, what is halogen. In a periodic table, if I just in a periodic table there is last group, that is not last group, the second last group, that is group 17. There are 18 groups in a periodic table. So group 17 contains elements, and those elements are called halogens. Members are fluorine, chlorine, bromine, and iodine, and astatine. Okay, so these are the elements of group 17. And from, as we know, when we move from left to right, atomic size decreases. And since atomic size decreases, the reactivity increases, unlike noble gases, which are stable with their octet state. So halogens have tendency to lose electron or gain electron. They have tendency to gain electron. For example, if I took chlorine, it can gain one electron. It has tendency to gain one electron to form chlorine negative ion, which is an ion. Okay, so it has tendency to gain electron. That's why it is a halogens are non-metals. If you look at the periodic table, there are metals, non-metals, right? And yeah, from there are also metalloids. But the point is, question says which is super halogen. So obviously fluorine, being the very smallest ion, is most reactive. This is the most fluorine being the most reactive and very reactive atom. So it can easily gain electron to form fluorine minus. Okay, so with fluorine charge. So this is the reason why fluorine is called super halogen. And talking about also electronegativity, if you look the electronegativity trend, electronegativity, what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to pull the bonded pair of electrons. Bonded pair of electrons pulling ability of an atom is what is electronegativity. For example, if I draw the molecule of H2O, so there is two bonds over here, right, and two hydrogen atoms. So we know oxygen is more electronegative than hydrogen. Since oxygen is more electronegative than hydrogen, this becomes a polar bond. These are the electron pair. The bond is what is actually bond is just the sharing of electron. Covalent bond is just a share of electrons. Since the oxygen atom is more electron, it attracts this bonded pair of electrons. It attracts towards its side. So that's why it becomes polarity develops with partial negative side, and it becomes partial positive side. This is what is electronegativity. If you look at the entire periodic table, the electronegativity trends follows is fluorine, chlorine, bromine. No, sorry. I'm just writing halogen order. So the electronegativity order is FONCl is equivalent, Br, then iodine, ISC. These are equivalent, then P, phosphorus, hydrogen, and boron. So this is the trend, whereas the most electronegative element is fluorine, followed by oxygen, followed by nitrogen and chlorine, which are same, and then bromine, then iodine, sulfur, chlorine, then phosphorus, hydrogen, then boron. So this is the electronegativity. So this is the reasons why might be a fluorine might be a super halogen. Okay, chlorine, talking about the chlorine, what is chlorine? Chlorine has got the most electron affinity. This is what is electron affinity. It has tendency to do gain electron to form its a negative charge. So since chlorine has got the highest, no, that's why chlorine got the highest electronegativity in the entire periodic table. It is highest electron affinity. Okay, so point to be remembered. So chlorine has got the highest electron affinity. Why do you think fluorine has not got the highest electron affinity but chlorine does? In fact, being fluorine is more reactive. Why is so? So my question is, why chlorine has got the more electron affinity than fluorine? Since the fluorine is smallest in size and chlorine is down the
fluorine. That makes, you know, it's actually is due to repulsion between electrons in fluorine. So if you look over the fluorine atom, you know, it is close to the nucleus. Okay, some your orbitals are, let's draw with electronic configuration. So what's the electronic configuration of fluorine? The last electron configuration of fluorine comes out to be helium, or 2s 2p 7, right? So this is what is the electronic configuration of fluorine. And what is the electronic configuration of chlorine? It is helium 3s2 3p7. So this is electronic configuration of chlorine. So there are no, not helium, sorry, I'm very sorry, this is neon. This means the electronic configuration of neon followed by the electron. So here it is the outermost shell is near the nucleus of an atom. In case of fluorine, the outermost shell is near the nucleus of helium, right? So that means the electrons are very much close to the nucleus. So if I just give analogy of fluorine, if I just give the analogy of fluorine atom, here the size of fluorine atom is so small that if we consider the electron, it can't, due to the repulsion between these electron, the inner electrons, there is a repulsion between this electron and this electron, there is a repulsion. So that's why the chlorine being the bigger in size, there are one extra cell. So chlorine being the bigger in size, it can easily has affinity to electrons due to less repulsion between these bonded electrons. There is also repulsion. It is what a fluorine atom is very small, so there is a repulsion between electrons. It can't attract easily. Why? Because there are repulsion between electrons in fluorine atom cloud, in electron cloud. You know what is electron cloud? In electron cloud, there is a repulsion between electrons in fluorine atom, whereas there is no such repulsion between electrons. That's why chlorine can easily take electrons, but in case of fluorine, it can repel electrons. So that's why it doesn't mean that fluorine always repels electron. Okay, so it's just a comparison between fluorine and chlorine. When you just compare between fluorine and chlorine, it turns out chlorine has got more affinity than fluorine. It doesn't mean that fluorine is actually not have any affinity at all due to its small size. Okay, so that's a very wrong concept. We just have to know, in comparison between fluorine and chlorine, has got the more electron affinity than fluorine does. So this is done. So which is superhalogen? It is definitely fluorine due to very small size and very much reactivity. Might be also due to most electronegativity atom. So okay, now let's go to the next question. The aloe stain in hands while working with nitric acid is due to the formation of. Okay, so the aloe stain in hands, do you know when you are just playing with some nitric acid, when some nitric acid liquid drops in your hand, there comes in your hands, let's say this is your hands, and when let's say some nitric acid drops, so this is drop of nitric acid, this is HNO3, and when nitric acid drops in your hand, there comes the yellow mark. And what is this yellow mark? Is actually your your hand are made up of cells. Since your hand are made up of cells that must contain some proteins, this is actually a reaction between the HNO3 and the proteins to form xanthoprotein. So actually what happens is the reaction happens to form xanthoprotein. This is due to the formation of NO2. Okay, so this is a very factual question, and this has to be known, and it is a important question as well. So NO2 is the correct option here. So compound have been wrought on fissional, which reacts with copper metals to give black PBT. The simple
Simple logic. We don't need to know anything. We just need to know rotten fish smell. Don't even care about this statement. The one key point over here is just the rotten fish smell. If we know which of the following compounds has got rotten fish smell, then we can easily tick on what is this, phosphine or phosgene? This is phosphine gas. Okay, so this is phosphine, sorry, this is phosphine gas. And this is what, hydrogen sulfide. This is what, hydrogen sulfide. And this is ozone. Everybody knows this is ozone, and this is sulfur dioxide. What is, repeat after me, sulfur dioxide. And you have to remember some smells of these compounds. Okay, I have put all the options very similar. So why? Look at now, the important part of this question is you have to know which gas smell what. If there is a phosphine gas, if there is a phosphine gas, what does it smell like? It smells like rotten. It smells like what does it smell like? It smells like rotten. It smells like rotten fish smell. सड़ा हुआ मछली की तरह क्या करता है, स्मेल करता है. What does it smell like? Rotten fish smell. If there is provided hydrogen sulfide gas, then what does it smell like? It smell like rotten egg smell. What does it smell like? Rotten egg smell. And if there is ozone gas, what does it smell like? It just smell like rotten smell. And we don't care about this smell. So repeat after me. If the question says a compound that smells having rotten fish smell, then what do you take? You take phosphine gas. What do you take? You take phosphine gas. If the question says the compound having rotten egg smell, then what do we have to take? You have to take hydrogen sulfide gas. Repeat after me. What do you take? You have to take hydrogen sulfide. If the question says only rotten smell, then what do we have to take? Is you have to take ozone gas. Do you get it? Yes. Now let's get to the next question. Next question is, if the change in kinetic energy is 4%, the momentum changes by. If the change in kinetic energy is 4%, then momentum changes by. It's a very easy question. We have to find the relations between kinetic energy and momentum. It is a very important question. It is what is very important question, and the formula we have to derive is also very much important. Okay, so you have to listen carefully, note down the option. So now let's derive it. We know kinetic energy is equal to half mv square. Everybody in the universe knows what is the formula of kinetic energy. And let's just multiply and divide by m on numerator as well as denominator signs. What do we get? We get kinetic energy equals to half. We're multiplying by m and m on denominator and numerator. What will we get? M square v square upon m. To get it, are you getting it right? Now kinetic energy equals to, what do you get? Half. Do you know what is the formula of momentum? What is the formula of momentum? Momentum equals to mass into velocity. Everybody knows this, right? So we can substitute this m square into v square. What can we write in place of m square v square? We can write p square. Okay, p square by m. So we get the relations between momentum and kinetic energy. So what comes is p square equals to 2m ke. So p equals to root 2 mk. This is very much important. This is very much important. P is equal to root under 2m into kinetic energy. And what is kinetic energy? Kinetic energy equals to p square by 2m. This relation has not to be forgotten. If you forget this relation, if you forget this formula, then don't even learn physics from now. Just forget the physics. If you don't know this formula, just leave the physics, because physics don't deserve the people like you do not know this formula, because this formula is very much essential. This is the backbone of physics. This is a backbone of energy physics. So this is very much important. So now I'm going to rub it. Now we derive the relation. What was the relation? Say, don't just stay silent like you don't have any tongue, or you don't have any mouth. Just speak. What will be the relation we provide? We just derive. What was the relation? Repeat after me. We derive p equals to root under 2 m kinetic energy. So
What is the propensity? We get 2 is a constant. It is a constant. Mass is also constant. So what is the relation we get? P is directly proportional to root under kinetic energy. This means P is directly proportional to kinetic energy is power 1 by 2. Is this the same thing? Can I say this and this are the same thing? Obviously, this is a very basic thing. So the question is, if the change in kinetic energy is 4%, the momentum changes by. What do we get the relation? We relation this P is directly proportional to root under kinetic energy. So this is the relation. Oops, I'm so sorry about the disturbance. So we get the relation P is directly proportional to kinetic energy power. What do we get? Kinetic power 1 by 2. Kinetic energy ko power 1 by 2. We get the relation P is directly proportional to kinetic energy ko power 1 by 2. That is P is directly proportional to root under kinetic energy. Now, solving this, how do you solve error problem? If there is kinetic energy is 4%, then the power comes into the foreign side. So the error in momentum is equals to 1 by 2 error in kinetic energy. I am representing kinetic energy is E kinetic energy. So what is the error in kinetic energy? What is the error in kinetic energy? 4%. Solving, we get what is, we get 2%. So what do we get? 2%. Do you get it or not? Do you get it or not? This is how we solve the error questions are supposed to be done. We find the, first of all, we find the proportionality sign relations. Then we found. So let me just give you another question. If the error in kinetic energy is 4%, what is the error? No, I'll just start the question. What is momentum is 4%, then what is the error in kinetic energy? Do this question. Pause the video and do this question as fast as possible. Do it just now. If the error question says if the error in momentum is 4%, then what is the error in kinetic energy? Do it fast. Okay, hope you pause the video and do the question. So simply we find the relation. What is the we establish the formula between kinetic energy and momentum. What do we know? We establish the relation between momentum and kinetic energy. What do we know? We know kinetic energy is, what do we know? Kinetic energy equals to P square by 2m. So now we discover the proportionality with momentum. So what is this? Kinetic energy is directly proportional to P square. Now we get the relations. Now the question says, is there is a momentum? What is the error in momentum? 4%. Then we just find it. Error in kinetic energy upon error equals to the power comes into the role. The power comes into role and it becomes 2 times P upon the momentum change. So we know what is the change in momentum. It's 4%. If 4%, and what is the total momentum energy? It's 8%. This is how our error problem should be done. You get it? If you don't get it, just repeat the video and watch it again. Till the time you don't get it, don't move to the ahead lecture. Okay, don't move ahead in the in this lecture. So this is done. This is very easy questions. This was a very easy question. Okay, now let's get to the next question. For real and erect object, concave mirror always form. This is very easy image. It's very easy. For convex mirror, so we know there are 2 types of mirror, mainly speaking. I just taught you everything about mirror. So there are 3 types of mirror we have to basically study. What are the 3 types of mirror? This is say, what are the 3 types of mirror? This is plane mirror. What is it? Plane mirror. And what is next one? This is convex mirror. What is next one? Convex mirror. What is last one? Last one we have to study concave mirror. And I ask you, what's the mirror that dentists use? Then what do you say? Do you say concave mirror? Then I again ask you, what are the mirrors that are used in the vehicle's side view? What do you answer? We answer convex mirror. What do you answer? What do you question? What is the mirror that is used in your house to see your bad looks, the shit, your face that looks like shit? What kind of mirror do you use to see that kind of shit face? Then you have to say plane mirror. Then what do we have to say? We have to say plane mirror. Now let's get into detail. Now let's first talk about plane mirror. What is plane mirror?
So plane mirror is actually a mirror which is very plain. Okay, what do you mean by plain is very, you know, a mirror where one side is polished, a mirror where one side is polished and one side has got a very shiny surface. Then what are the properties of this plane mirror? When you stand it, this object distance and image distance are equal. If you stand here, this is object, and this is image, and image distance and object distance are very equal in the plane mirror. So what we can say, one user is u equals to v. Now next one, what's the next feature of plane mirror? Since u is equal to v, there is what is magnification equals to 1. How we know, right? Magnification equals to v by u. Since v equals to u, both get cancelled and magnification becomes 1. So next question can be framed as, what is the magnification of plane mirror? Then what do we have to answer? We have to answer magnification is 1. Now what is the nature of the image formed by this image? Since what kind of image is formed by this plane mirror? This is a purely virtual image. Image is formed by the meeting of rays. Wow, how it's made. If you draw the ray diagram, then how it becomes is there's an image, and there's a ray of light coming over, and it is reflected, and again here is ray of light, then reflected, and this is where the image is formed. So the image is forming are the image forming by actual ray meeting? No, right? The reflected rays does not meet to form image. The reflected rays doesn't repeat after the reflected rays doesn't meet to form image. The reflected rays doesn't meet to form image. So what kind of image is this? This is virtual image. So what kind of image is this? Virtual image. And the image is erect, it's not inverted, the image is erect, like here is erect and here is also erect. So plane mirror always forms what kind of image? Repeat after me. What kind of image? Virtual and erect image. So plane mirrors always form virtual and erect image. So this is about virtual image. So do plane mirror always form virtual image? Your homework, do homework. If you don't do homework, then I'll come there to slap your ass. Just go home right now. Just pause the video, end the video, and do this homework. Now your homework says, do on what condition? Do plane. So I'll write in another here. So the question, your homework says, do plane mirror always forms if not the question says, do plane mirror always forms virtual image? If not, on what condition it forms real image? Do this question as soon as possible. Do this question ASAP. Do this question as soon as possible. Now this is about plane mirror done. Now let's talk about convex mirror. What kind of mirror? Convex mirror, the mirror that is actually the side views of vehicles. So the concave mirror properties, convex mirror properties, and concave lens properties are very similar. The convex mirror properties and concave lens properties are very similar. The convex side, only one point to remember about convex mirror. Just I'll give you tips. Just forget everything. What do you know about convex mirror? Just remember two things. Just other everything forget. Okay, just forget. Only 2 points. Remember. What are these points? First point, it is used in side view mirror. Side view mirror. It forms virtual and erect, and this is the only 2 points. Diminished object, not magnified. Virtual, erect, and diminished. Plus diminished object. Diminished means very small sized. Just remember these two formula, then you are done. Virtual and erect. What do you mean by virtual? Again, the virtual image means the reflected rays doesn't meet the reflected rays doesn't meet to form image. Such the image is virtual image. And what is erect is if this is object on the opposite side
the same object is formed, not inverted, so diminished is very small size. Now last comes the very important part about concave mirror. Now last comes the very important part. What is this and what is the power of this plane mirror? अरे यार प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, जल्दी बोल. पावर. अरे प्लेन मिरर का कोई पावर नहीं होता. अगर प्लेन मिरर का पावर होता वो होता तो प्लेन मिरर का तोड़ के अपना ग्लास लगा लेता. पावर कोई नहीं है. क्यों नहीं है पावर, जल्दी बोल. क्यों नहीं है पावर, क्यों नहीं होता प्लेन मिरर का? अरे भाई कैसे होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट होगी ना. फोकल लेंथ क्यों इनफाइनाइट होगी, जल्दी बोल. क्योंकि फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी. क्योंकि क्या होगा फोकल लेंथ क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, R/2 होगा नहीं. क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा, इनफाइनाइट होगा. तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ना भाई. यार ये तो गोल होना चाहिए था ना. मतलब ये तो सीधा है. मतलब इसका रेडियस क्या है, रेडियस इनफाइनाइट. तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट है. फोकल लेंथ क्या होता है, पावर क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ होता है. सो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो तो पावर क्या होगा, 0 होगा. यार बहुत बेसिक से सवाल. नाउ लास्ट कॉनकेव मिरर, जो भी याद करना है इसी पे ऊपर याद रखना, बहुत ही. तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक साइड पे कन्वेक्स साइड, इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स साइड. इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव साइड. ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. ये क्या है, फोकल लेंथ है. ये क्या है, फोकल लेंथ है. और ये क्या है, फोकस है. ये क्या है, फोकस है. ये क्या है, फोकल लेंथ. दिस इज व्हाट इज फोकस, दिस इज व्हाट इज फोकल लेंथ, एंड दिस इज व्हाट इज 2f, दिस इज व्हाट इज 2f. सो मैं 3 पार्ट लिखता हूँ, 1 2 3. चल अब मुझे बता कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल, बता मुझे. रियल और वर्चुअल, बोल जल्दी भोग. कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है, रियल बनाता है या वर्चुअल बनाता है, जल्दी बोल. रियल बनाता है ना, तो लंड बनाता है रियल. भाई कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाता है. क्या बनाता है, दोनों इमेज बनाता है. कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, दोनों इमेज बनाता है. भाई अगर फोकस के देख, तू इधर से इमेज ला, ठीक है, इधर से क्या ला, सॉरी ऑब्जेक्ट ला. तू इधर से ऑब्जेक्ट ला. अगर तेरा ऑब्जेक्ट इधर है, मतलब एक इसको क्या कंसिडर है, इन्फिनिटी पे, ठीक है. अगर तेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब बहुत ही दूर. ये देख ये क्या है, फेस है बहुत ही दूर है. मतलब इन्फिनिटी में तो तेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा. तेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा. सो अगर ऑब्जेक्ट किधर है, सो ऑब्जेक्ट इमेज, तेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा. भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा. और तू ला जल्दी इधर ला, ठीक है, इधर से ला. और 2f में लगा, ठीक है. इमेज अब इधर रख, 2f पे रख ले. इमेज पे 2f में रख ले. अगर 2f में इमेज है तो इमेज कहाँ बनेगा, जल्दी बोल. 2f में बनेगा, ठीक है. जहाँ इमेज इधर ही बनेगा, इधर ही ऐसे बनेगा. रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा. वर्चुअल नहीं बनेगा, रियल बनेगा. इन्वर्टेड बनेगा. रियल क्यों बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज से लाइट मिलती है. बाद में समझाऊंगा. अब देख, अब 2 पे ऑब्जेक्ट रख, ठीक है. 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रख. तो अगर 2 पे ऑब्जेक्ट रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, 1 पे बनेगा. अगर इधर तू एक ऑब्जेक्ट रख तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है. एक कोई मैं नहीं लिख रहा. अब देख, फोकस पे इमेज रख, फोकस में इमेज रख, तो इमेज कहाँ बनेगा, जल्दी बोल. अबे भाई यार पहले बता तो दिया. फोकस इमेज इन्फिनिट में तो फोकस में बनेगा, तो फोकस में बनेगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा. कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा. अब ला, इधर ला. अब देख मैं 3 पे रख रहा हूँ, ठीक है. अब 3 पे रख रहा हूँ, किधर रख रहा हूँ, जल्दी बोल. 3 पे रख रहा हूँ, किधर, 3 पे. और मैंने 3 पे इमेज रखा, 3 पे. 3 मतलब फोकस और ए ऑप्टिकल एक्सिस, मेन पॉइंट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो मेन पॉइंट, ऑप्टिकल क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. 3 मतलब क्या है, जल्दी बोल. 3 मतलब ऑप्टिकल सेंटर. और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाई ओ. व्हाट इज दिस, दिस इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, जल्दी बोल. कहाँ बनेगा, बस. अब यही टाइम पे कहाँ बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा. मैं रे डायग्राम से समझा दूंगा. अगर इमेज 1, ठीक है, बस इतना ही याद कर ले और कोई ज़रूरत ही नहीं. अब बात आई वर्चुअल और रियल की. कॉनकेव मिरर की, भाई कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है. दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज 2f. इफ आई केप्ट हियर object, okay, the rays, what happens to the rays, they come here, okay, and the rays get reflected. And same case from here, one rays from optical axis, one ray from focus, भाई बचपन में पढ़ा होगा ना. one rays from focus and one rays here, and it gets reflected. And
same gaze, and it gets reflected. And here is where is two rays actually meet. Two rays जब reflected rays actually meet. भाई जो रिफ्लेक्ट होके आए थे रेज वो एक्चुअली इधर में मीट हुआ. देख इधर एक रिफ्लेक्शन होके इधर गया और एक फोकस से पास होकर इधर गया. तो भाई 2F में क्या होगा, इमेज बना. पर इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है भाई, इन्वर्टेड. सो कनकेव मिरर पूछे, कनकेव मिरर टिपिकली कौन सा इमेज बनाता है, कनकेव मिरर टिपिकली कौन सा इमेज बनाता है, कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल, घंटा वर्चुअल. भाई रियल बनाता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड. कौन सा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है. पर एक ही एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, जब इमेज कहाँ हो, फोकस और ऑप्टिक के सेंटर के बीच पे हो. भाई के तो दिया भाई, जब इमेज फोकस और ऑप्टिक के सेंटर में बीच पे हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे हो, मतलब इधर वन से डिनोट करा इमेज. यही फोकस और ऑप्टिकल से कहीं भी है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो, तब क्या बनेगा इमेज, तब क्या बनेगा, इधर बनेगा भाई, इधर बनेगा. ठीक है, इधर बनेगा. इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा. डिफरेंट साइड, मतलब सेम साइड नहीं भाई, इधर साइड बनेगा. मिरर के बाजू में बनेगा, मिरर के बिहाइंड बनेगा. तब इसको क्या कहते हैं, इमेज. इमेज क्या कहते हैं, वर्चुअल बनाता है भाई. इधर ऐसे रेज आएंगी, इधर से चले जाएंगी, इधर से आएंगी, इधर से चलेंगी. तो ऐसे करके एक्चुअल रेज नहीं मीट होते थे, इसलिए क्या करते हैं, वर्चुअल कहते हैं. जब इमेज 3 पे हो, देख जब इमेज 3 पे हो, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो, तब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी. तब बेसिक इमेज में सो क्वेश्चन सेज. सो यही बात है भाई, हो गया भाई. सो अब देख कैसे कैसे फटाफट होती है भाई. फॉर रियल एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर रियल एंड इरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर. भाई मैंने क्या कहा था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या किया था मैंने, किधर गया भाई. कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो बात याद करने के लिए क्या था, एक साइड व्यू मिरर, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो तुझे क्या याद करनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो ऑप्शन में खोज वर्चुअल और इरेक्ट, एक ही ऑप्शन पे वर्चुअल एंड इरेक्ट. रियल एंड इरेक्ट नहीं होता. ये किस केस में होता है, इस किस केस में होता है, एक कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर के केस पे होता है. किसके केस पे होता है, कनकेव मिरर पे. इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, कनकेव मिरर में भी इमेज कहाँ होनी चाहिए, कनकेव मिरर में. मिरर इसके और इसके बीच में नहीं होना चाहिए. अगर इसके और इसके बीच में कहीं भी हो तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज कैसी बनेगा, रियल बनेगा. कैसी बनेगा, रियल बनेगा. कैसी बनेगा, रियल बनेगा. ये सब क्या इमेज है, ये सब रियल इमेज है भाई. वर्चुअल सिर्फ एक ही है भाई, एक ही है. ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग ऑप्शन भाई, ये तूने सही कर रखा है. ब्लीचिंग ऑप्शन क्लोरीन का कैसा होता है, ऑक्सीडेशन और परमानेंट होता है भाई. इसी बात पे क्वेश्चन चेंज किया. अब बोला यासुटू, अब क्या बोलेगा, क्वेश्चन पूछा. सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन कैसा होता है, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है, जल्दी बोल. क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है ऑक्सीडेशन से. और कैसे होता है, परमानेंट होता है. मतलब एक बार ब्लीचिंग हो गया तो उसे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है. अब बोल यासुटू का, अब इस क्वेश्चन में पूछा यासुटू का ब्लीचिंग एक्शन कितना है. अब क्या कहेगा, अब रिडक्शन और टेम्पोररी. भाई एक बात याद रखनी है. सो क्लोरीन कैसे ब्लीचिंग करता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग मतलब रंग उतारना. ठीक है, ब्लीचिंग मतलब रंग उतारना. अगर क्वेश्चन में पूछा क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन कैसा है, तो क्या कहेगा, तू ऑक्सीडेशन से होगा. किससे होगा, ऑक्सीडेशन से होगा और परमानेंट होगा. और क्वेश्चन में पूछा एसिड का ब्लीचिंग कैसे होगा, तो क्या कहेगा, रिडक्शन से होगा. और कैसा होगा, टेम्पोररी होगा. याद करना. और दोनों बात में एक कॉमन चीज़ है, क्या चाहिए ब्लीचिंग के लिए, क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए. मतलब मॉइस्चर मतलब यार अबे भाई यार, मैं रिएक्शन से मैं क्या करता हूँ तो समझा देता हूँ भाई. सेल पहले वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, फिर इधर ऑक्सीजन से था ना, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है. ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है. क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है. क्या निकालता है, नेसेंट मतलब रिएक्शन में होने के अंदर ही जब जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और परमानेंट होता है. मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि इसे रिप्लेस नहीं करता है. जब SO2 मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, पर क्या है, वाटर ही क्या होता है, मॉइस्चर होता है. तो इससे क्या निकलता है, जल्दी बोल. इससे हाइड्रोजन निकलता है भाई. हाइड्रोजन क्या करता है, रिडक्शन करता है. इसलिए SO2 का ब्लीचिंग कैसा होता है, रिडक्शन और टेम्पोररी होता है. ठीक है, नाउ which is correct about digestion of fat. सो फैट का डाइजेशन
भाई मैं लुल्लू सा क्वेश्चन कर देता हूँ पहले। HIV एड्स इज नॉट ट्रांसमिट भाई, ये तो ठीक है भाई। विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? जल्दी बोल। विटामिन B12 में कैसा क्वेश्चन है? कोबाल्ट होता है। कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट होता है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? जल्दी बोल। मैग्नीशियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जल्दी बोल। मैंगनीज होता है। होता है, इसलिए बोला भाई। विटामिन B12 का कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट होता है। कौन सा होता है? कोबाल्ट में। क्लोरोफिल पे कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से कौन सा मेटल होता है? मैंगनीज होता है भाई। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से दो मेटल इन्वॉल्व होते हैं? मैंगनीज और क्लोरीन। सो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से दो मेटल इन्वॉल्व होते हैं? मैंगनीज और क्लोरीन। कौन से? मैंगनीज और क्लोरीन। So again, once again, which element is present in vitamin B12? Which element is present? Cobalt. Which is this not carbon monoxide? This is cobalt. This is not carbon monoxide. This is cobalt. One C is capital and one C is small. Cobalt. And which metal is present in chlorophyll? You have to say magnesium. Which metal is present in mitochondria? You have to say manganese. Then which metal is responsible in photosynthesis? Then what do you say? You say manganese as well as chlorine are very much important elements that takes part in photosynthesis. So अगर तू क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा ना, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेगा ना भाई, मैं क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ भाई। इतना है भाई, इतना है मेरे पास। तू बना सकता है क्या? देख, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ऐसे करके। पोरफायरिंग होते हैं, ठीक है। ये देख आर ग्रुप होता है, पर 5 होते हैं, 5। और एक फाइटल टेल होता है, पोरफायरिंग रिंग होता है, और इधर से लंबा सा एक फाइटल टेल होता है। सो एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है भाई। दिस इज क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब देख भाई, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज बाय स्टोरिंग एट कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर भी बता देता हूँ भाई, इतना दिमाग है मेरे पास। टेम्परेचर भी रट रखा है, देख 196 डिग्री सेल्सियस। देखा भाई, अगर इस टेम्परेचर में तू कुछ किसी भी टिश्यू को, किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू को स्टोर करेगा तो क्या कहेगा इसे क्या होगा? प्रिजर्व होगा। अगर इस टेम्परेचर पे किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू को रखेगा तो वो क्या होगा? प्रिजर्व होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब मुझे बता, फॉर्मेलिन क्या होता है? बता जल्दी, फॉर्मेलिन क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन होता है 37% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? 37% सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड माने HCHO भाई। अगर ये नहीं आता ना तो डूब जाए एक चम्मच पानी में, ठीक है। इसका क्या होता है? 37% सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मेलिन। ये मैंने क्यों बताया भाई? ये भी क्या होता है? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जो तूने बायोलॉजिकल लैब पे देखा होगा ना, ऐसे करके डब्बे पे कुछ लिक्विड आते हैं, ज़रा सांप रखते हैं, ठीक है। और किसी बॉक्स पे भैगुता रखते हैं, मतलब फ्रॉग रखते हैं, ठीक है। किसी डॉग में वो रखते हैं। सो ऐसा क्या करते हैं? फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लोग नो मतलब लैब में के रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए। एक फॉर्मेलिन भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भाई, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है। इन बायोलॉजी लैब many species are preserved by using chemical. Name the chemical what is used to preserve such biological specimen, not species. Specimen means the species which are preserved. Okay, so specimen तो क्या देना है? फॉर्मेलिन रखना है। क्या लगाना है? फॉर्मेलिन क्या होता है? 37% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन। क्या होता है? 37% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन। भाई ने बता दिया भाई। रूटिंग हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीजन है भाई। रूटिंग हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीजन है भाई। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेली पढ़ाई है। तो रूटिंग हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। शूटिंग हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। मतलब एक कैलस है, ठीक है। कैलस मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास। So what is callus? Callus is undifferentiated mass. If you want to, but undifferentiated mass, what do you mean by undifferentiated mass? Undifferentiated mass is just a mass that is not differentiated in any kinds of parts of plant. Okay, that is not differentiated in any parts of the plant. So ये क्या होता है? undifferentiated पार्ट होता है। अगर मैं स्ट्रक्चरल डिफरेंट कर दूँ तो ऐसा होता है कुछ कैलस। और तो इसमें ऑक्सीजन डाल दे, क्या होगा? रूट्स फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? रूट्स फॉर्मेशन। अब इधर साइटोकाइनिन डाल दे, अब क्या होगा? शूट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? शूट फॉर्मेशन होगा भाई।
याद आ गई। तो रूटिंग हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। और शूटिंग हार्मोन किसको कहते हैं? साइटोकाइन को कहते हैं। डन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फैट का डाइजेशन कैसे होता है? ये मैं बाद में समझाऊंगा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन करके एक वीडियो डालूंगा, अपकमिंग वीडियो, उसमें मैं बता दूंगा फैट का डाइजेशन क्या था, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसमें मैं सारे फिजियोलॉजी डाइजेशन कैसे होते हैं उसमें मैं वीडियो डाल दूँगा, उसमें ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि फ़ैट का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो आ जाएगी जल्दी, वेट करना। अच्छे से ऐसे करते क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करने क्वेश्चन, और तेरा